अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? Usman and Khadija, I'm glad that you people have started working hard. आप लोगों का टेस्ट पर तो अब पहले से काफी बेहतर हुआ है. I'm sure you will continue working hard, all right? और टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट शुरू करने हैं बेटा, टेस्ट नहीं छोड़ने का, वो एक रिवीजन हो जाती है. All right. Yesterday we talked about distance, displacement, then we talked about speed, velocity, and then acceleration. All right, ऐसे ही we come to know that there is no big difference between distance and displacement except that of direction and being the scalar and the vector quantities. Same is the case with speed and velocity. And we talked about acceleration. ठीक है? तो acceleration की बात हो रही थी, इसका मतलब हमने ये लिया था, acceleration का क्या मतलब था? Rate of change of velocity. यानी जब भी velocity change होगी, acceleration प्रोड्यूस होगी. ऐसे ही है ना? ओके. थोड़ा सा कल के साथ हम कनेक्ट हुए थे. एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. Yesterday I gave you an example for speed and velocity. If any object which is moving in a circular path, what do you think? What's happening to it? What's happening to its velocity? Changing. So, if it is moving in this direction, in a circular path, anti-clockwise, what do you say about its velocity? If it is moving with a constant motion of 26 meters per second. Okay? It's moving around this center in this part, in this way. So, if any object is moving in a circular path with a constant speed or velocity of 26 meters per second, what do you say about its velocity? Does it contain velocity or speed or what? Akan says velocity nahi hai, but speed. Why speed? Direction change. But its magnitude is constant, that is 26 meters per second. My question is, okay, let's talk about the acceleration of this object. Acceleration produce हो रही है? Yes or no? Is there any acceleration in it? Magnitude is fixed, constant, same, uniform. That is 26 meters per second. Acceleration, yes or no? Sabit, what do you say? No? No.
Haji, yes or no? Sadiq says no. All right, Sadiq, तुम्हारा तो नाम नो में लिख दूंगा. Hakan, no. Heather, no. No acceleration. No acceleration. Heather. Anybody for yes acceleration? G. Umulmani, Usman, Khadija, Bakhtiar. Object moving a circular path with a constant magnitude of 26 meters per second. They said we cannot call it velocity because it is changing every second. So do you expect इसकी acceleration है कि नहीं है? तो अब तक तो सब लोगों ने कहा है no. No, sir. कोई yes वाला बच्चा है? No. There is an acceleration in it. There is an acceleration in it. सोचो क्यों? हाँ जी 26 मीटर पर सेकंड की स्पीड फिक्स है, इसकी चेंज ही नहीं हो रही. What is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. Velocity किस चीज से मिलकर बना है? Velocity is made up of magnitude and direction. If any one of them changes, don't you think the velocity will change? So the direction is changing here, isn't it? So when direction is changing, what is happening? Acceleration. Change in velocity means acceleration. Okay? The circular path, when any object moves in a circular path, velocity to change nahi ho rahi, magnitude is constant, fixed, same, but because of the change in the direction, acceleration produced. Got it? Sure, shabash. और अच्छी तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को समझ लो. ओके, इतनी सिंपल चीजें नहीं है, डेप्थ में जाना है, समझने हम लोगों को. सो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा टी वी ओवर टी. बाय द वे, इस तरह की एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं. एंगल बना लो प्लीज. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सिंपल इजी चीजें. We have read distance, displacement, velocity, and acceleration. I'm going to write some vocabulary words here. आपने मुझे उनके मतलब या उनके synonyms बताने हैं. Uniform, non-uniform, और क्या हो सकता है? Instantaneous, जी. Uniform. So for uniform we can say constant. Okay. Same. Constant. Consistent. Consistent. Same. Yes, come on. Or any other synonym or similar word for uniform other than
कांस्टेंट, कंसिस्टेंट, सेम। ओके, चलो याद आएगा तो बता दो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म, डिफरेंट। haphazard, जी बेटा, haphazard, haphazard, और आसान, अभी नहीं आ रहा जहन। ओके, इसको इस्तेमाल करना। इंस्टेंटेनियस, चेंज इन इंस्टेंट। ओके, लिख देता हूं, चेंज इन इंस्टेंट। ये इंस्टेंट क्या चीज होती है? एकदम, फौरन। immediate, वालेकुम सलाम बेटा, इमीडिएटली। क्या बात, इमीडिएटली, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक दो वर्ड्स हैं, वो मैं कहाँ लिख सकता हूँ? हिबा, हमने अभी तो खास काम नहीं किया, हमने सिर्फ ये तीन वर्ड्स लिखे, इनको देखते हैं। रेगुलर एंड इरेगुलर, मैं किस जगह लिख सकता हूँ इसमें से? रेगुलर यूनिफॉर्म में लिख दूं? ओके, और इरेगुलर यहां पर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कहीं पे लिखा हुआ हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऊपर लिखता हूं वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है? कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट वेलोसिटी? If any object is moving with uniform velocity, so what we can say about its motion? ना वो decelerate कर रहा है ना वो accelerate कर रहा है। Yeah, use another word. और फंसा दिया तुमने हमें एक लफ्ज बता के, डीएक्सेलरेट। तो Umul Bari, like Fatma, she said, no, neither it is accelerating nor deaccelerating. मतलब क्या हुआ इसका, कुछ थोड़ा सा बता देंगे हमें? वो एक कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है और सारे टाइम में, ना उसकी इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है एक ही डायरेक्शन में। कांस्टेंट स्पीड जब कह रहे हैं तो डायरेक्शन जरूर कहेंगे ताकि वो वेलोसिटी बन जाए, ठीक है बेटा? All right, शाबाश। So we are using the word constant, uniform, same for that particular motion. इसका मतलब है that motion of that object is not changing in terms of magnitude and in terms of direction, both. It is moving with a uniform, same, constant, consistent velocity, right? Non-uniform क्या है? Non-uniform velocity. Let's suppose any object is moving with non-uniform velocity. There is a change in speed, change in velocity, rather. Either it is accelerating or deaccelerating. Okay, right? ठीक है, शाबाश। Instantaneous, फौरन, एकदम, immediately. ठीक है, इसका क्या मतलब है? I'm sure आप लोगों ने बुलेट ट्रेन का नाम सुना होगा, और कुछ बच्चे शायद उन्होंने बैठे भी हो उसमें या देखा होगा यूट्यूब पे। उसकी कितनी स्पीड होती है बुलेट ट्रेन की? जी, कोई बच्चा बताएगा? More than 300 kilometers per hour, 275, 300 kilometers per hour.
इस हाई स्पीड पे जाती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बुलेट ट्रेन। उसके अगर पर लग जाए तो उड़ भी चले। यस, तो बुलेट ट्रेन बड़ी हाई स्पीड पे गुजरती है, राइट। लेट्स सपोज बुलेट ट्रेन की 10 बोगीज थी, या चले 4 बोगीज थी। और ये उस टाइम 3 बोगीज एंड इंजन, ऑलराइट। अच्छा जी, इस कैमरे के सामने से गुजरना है उस विद दैट हाई स्पीड, नजर आएगी हमें 3 बोगियां 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजर रही। इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ मोटरवे, अगर कभी चांस मिला हो कि साइड वाइज आप खड़े हैं मोटरवे पे, हैव यू एवर सीन कि कार एंड बसेस कितनी स्पीड से गुजर रही है? डर लगता है। What's their speed? 120 kilometers. So if you are going with a speed of 120 kilometers, उतने हाई स्पीड पे बुलेट ट्रेन आपको ओवरटेक करेगी। Now if you are standing, तो फिर किस स्पीड से जाएगा? नजर ही नहीं आएगा। So we are using a very special camera to capture that motion, कि वो इस कैमरे के सामने से यूं करके दूर, तो वो बड़ा ही कोई हाई रेटेड DSL कैमरा आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो हमें पता चला कि it took like 0.2 seconds for the train to pass through this point. पूरी ट्रेन 0.2 सेकंड में पास। हाँ हाँ बिल्कुल है, स्लो मोशन में यू कैन सी दैट, ठीक है। तो ये फास्ट मूविंग पैर है ना, इससे तो आपका पिक्चर लेते हैं समटाइम, तो आप इसको स्टिल देख सकते हो, राइट। तो अब आपने स्लो मोशन में उसको देखा कैसे जा रहा है, राइट। तो हमने इसकी स्पीड जो 0.2 सेकेंड थी उसका इंस्टेंट कैप्चर किया कि नहीं किया? So at this time, at this instant, 0.2 second means it is the 1/5 of a second, very small fraction. उस वक्त उसकी velocity क्या होगी? That velocity is called instantaneous velocity. Yesterday we talked about initial velocity and final velocity. You remember? और ये बीच में करके किसी एक इंस्टेंट पे जो velocity होती है, that is called instantaneous velocity. ठीक है, समझ आ रही है बात? So mainly we are going to talk about uniform and non-uniform, not only for velocity but also for acceleration. So थोड़ा सा मुश्किल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? जी जी हाँ, यूनिफॉर्म change in rate of velocity. Very technical language, थोड़ा easy करके कोई बताएगा ताकि हम सबको समझ आ जाए। When we say somebody, an object is moving with uniform acceleration, मतलब क्या होगा? Let's suppose, मैं example दे दूं। At point A, we have started observing any motorist, ठीक है। इस पॉइंट पे इस मोटरिस्ट की कोई स्पीड है, लेट्स सपोज मैं किलोमीटर्स पर आवर ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा यू कैन कॉम्प्रिहेंड इट इजीली। So its velocity at this point A is 60 kilometers per hour. Now, if I say that this object, this car is moving with uniform acceleration, what do you think? What changes or what will be the motion of this car? How will you define that?
Uniform acceleration. Do you think its velocity will change? It will remain constant? Somebody is saying uniform acceleration means uniform velocity. You think uniform acceleration का मतलब है uniform velocity? तो फिर uniform velocity का क्या मतलब है? Uniform velocity means zero acceleration. Uniform velocity means no change in velocity. When there is no change, no acceleration. So ये तो हो नहीं सकता कि uniform acceleration and uniform velocity are same. No. So uniform acceleration is being produced in this car. Define its motion. Will it move with same velocity? No. Will it no, not same. जी velocity की बात. Velocity will increase. Okay, one thing is established. Velocity is increasing. I'm just making intervals of like 10 seconds. 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 40, and so on. So its velocity at A was 60 kilometers per hour. After 10 seconds, if its velocity is increasing, what do you expect? What will happen to the velocity? It will change. क्या बन जाएगी? Increase or decrease? Uniform acceleration. We are discussing this thing. कितनी हो जाएगी? All right, 70 कर 70 kilometers per hour. What about at 20 seconds? 80 kilometers per hour. At 30? And at 40? 100 kilometers per hour. You can clearly see that after every 10 seconds, its velocity is increasing by 10 kilometers per hour. So, from A to this first 10 seconds, you think there was a change in velocity from 60 to 70? Change in velocity? Acceleration is produced from 70 to 80, same time, 10 seconds, acceleration is produced. Same acceleration. Over here, same acceleration, velocity is increasing with the equal intervals of time. So after every 10 seconds, its velocity is increasing uniformly. So there is increase in velocity uniformly, which is termed as uniform acceleration is being produced. There's a difference between uniform acceleration and no acceleration. When we have no acceleration, what is the velocity? Does it change? Yes. When there is no acceleration, we have uniform velocity. And when we have uniform acceleration, what type of velocity we have? Uniformly increasing velocity. हर इंटरवल में वो इंक्रीज होती जा रही है और तेज होती जा रही है और तेज होती जा रही है.
ठीक है, समझ रहे हो? देन वी हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिक्स्ड एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कंसिस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज। आप देखिए, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। वी हैव सेम एक्सेलरेशन थ्रू आउट, व्हिच इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, थोड़ा सा आगे चले। यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे नो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मुझे ये बताओ, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन पे वेलोसिटी कैसे हुई? देखो यहां पर एक्सेलरेशन कितनी आ रही थी? 80 माइनस 70, 10 डिवाइडेड बाय 10, एक्सेलरेशन वाज 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये जो भी है। फिर फातिमा कहेगी सर यूनिट तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। ओके, चलो इसको मैं मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर कर देता हूं। गिव मी दिस लेवरेज के मैं गलत मलत से यूनिट्स यहाँ पे लिख दूं। ऑलराइट, टू जस्ट मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। मुझे ये बताओ कि सब जगह पे ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, सब जगह पे एक्सेलरेशन सेम। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मैं कहूं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो फिर वेलोसिटी कैसी होगी? 60 के बाद 70, 70 के बाद कितनी होगी? 90। शाबाश। अब पहला इंटरवल कितना इंक्रीज था? 10 का। दूसरा कितना इंक्रीज हुआ? 20, डबल ऑफ दैट। और थर्ड पे 100। शाबाश, और ज्यादा 90 से उससे भी ज्यादा इंक्रीज। तो दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये तो एक्स्ट्रा इंक्रीज इन वेलोसिटी हो रहा है, तभी हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है बेटा, तो वेलोसिटी एक स्टेप नीचे होती है और एक्सेलरेशन आगे बढ़ती है। ओके, थोड़ा सा मैं तुम लोगों को और कंफ्यूज करने लगा कर दूं। यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है। इफ वी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसका कर्व कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा? यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग उसका कर्व कैसा बनेगा? जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज होती है इफ वी हैव टाइम एंड वेलोसिटी ग्राफ। व्हाट डू यू से? What type of curve we will get for uniform velocity? Same time, same velocity increase, uniform, steady. ठीक जा रही है straight line, uniformly increasing velocity. भाई ये ठीक है कि नहीं ठीक? पहले मुझे ये बताओ कैसे होगी यार? ये दो बच्चे कह रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसे कैसे? ये रेड वाली होगी या ब्लू वाली होगी? Why? Yes. Velocity is constant, uniform, not changing. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वही थ्रू आउट द टाइम रहेगी, चेंज नहीं होगी। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनिफॉर्म। शाबाश, गुड। ओके जी, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग ऐसे होगी? नहीं, कैसे होगी? ऐसी होगी।
क्यों होगी ऐसी बेटा? टाइम इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ग्रेडियंट बन रहा है ना इसका, यहाँ पे जीरो ग्रेडियंट था, यहाँ पे बन रहा है। ओके, आई जस्ट यूज दिस वर्ड ग्रेडियंट। याद रखना है इसको। अच्छा जी, यूनिफॉर्म इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी? ए जीरो, और इसमें एक्सेलरेशन होगी कुछ ना कुछ। लेट्स सपोज 8 कर ले, यूनिफॉर्म, ठीक है, सेम। अब मुझे बताओ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसा बनेगा वेलोसिटी टाइम? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए कर्व कैसा बनेगा? ऐसे वाला, शाबाश, ऐसे। velocity is not uniformly increasing, it is many times increasing, ठीक है? तो इसमें आपकी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगी, ऑलराइट, ठीक है? एनी क्वेश्चंस यहां पर? ये हम अच्छी तरह से भी डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट देना जरूरी है यहां पर, ऑलराइट? एनी क्वेश्चंस? So, is there any way to determine, जैसे यहाँ पर हमने किया था for calculations, can we have some relations for determining acceleration if we know the initial velocity, the final velocity, and the time? Do we have any formula or equations for that to calculate or determine the unknown values? Yes. What do we call them? Yes, equations of motion. In this chapter of kinematics, we are going to study two ways to determine the unknown values for kinematics. One is speed, velocity, acceleration, time. We have two ways. One is by calculation method, and other is graphical method. Okay, beta? Calculation method में we have equations of motion. और graphical method में we have displacement time, graphs, and velocity time, graphs. Okay? Equations of motion कितनी है? Let's talk about equations of motion. We have three equations of motion.
V stands for, U stands for initial velocity. V final velocity. Shabash. People online, A stands for Gianna. A stands for Acceleration. Shabash. Acceleration. Very good. T, Heather. Right. Sure. All right. T stands for time. And D for distance or displacement. We are going to use these symbols in these three equations of motion. First equation. That is A is equals to V minus U over T. कुछ familiar लग रही है? Yeah. This is the first equation of motion. इसका नाम ही है first equation. All right. Second. Displacement or distance is equals to the product of initial velocity and time plus half of the A T square. All right. This is called second equation of motion. And thirdly, we have what is that? Okay. The zero equations, these should be on your fingertips, right? If I just talk about these four things, five things rather, what is missing in the first equation? Out of this five, what is missing? There is no distance in it. What is missing in it? Which velocity? Yes. Final velocity. V is missing. And in third equation, time. All right. ठीक हो गया बेटा? So if you are provided with acceleration, final velocity, initial velocity, and you are supposed to determine the time, we are going to use the first. Same is the case with R. Right? My question with all of you is, why do you think, why do you feel that the numericals of physics are very difficult? पहले तो ये बताओ डिफिकल्ट है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स है ना क्यों है व्हाई ये मिटा दो बेटा ये साइड हाँ ऑलराइट गुड
Sadiq says that, or Heatherly, he thinks that both of them, they thinks that numericals, they are very easy if we are following the steps. So let me tell you what are those steps right at the beginning, so that you can follow those steps and make your life easier. Okay, Kaka? Solving the numericals. Go step by step. Step one. What is that? Make the data. What is data? Information that is provided. Shabash. This is very important. The first step is to make the list of all that information which is provided to you. I'm just giving you an example. Let's suppose there is a car moving on this road. It just started from rest. And in 5 seconds, its speed, your velocity become 15 meters per second. Find the acceleration. Find this. All right. How we are going to make the list of the data of this question? G. What information is provided to us? Time given है कितना time? We are just making the data first. Time T. How much time? 5 seconds. So we have underlined it and marked it. Yes. Any other information? कोई और चीज given है इसमें? खान velocity कौन सी velocity? फाइनल velocity का सिंबल क्या होता है? कितने? Khadija, my question with you and Usman is, how can we say that 15 meters per second is the final velocity of the car? Can't it be the initial velocity? Usman and Khadija, are you there? Their signals they turn very weak. लो जी, बच्चों ने भागना शुरू कर दिया। जी हादिया, hurry up please. This 50. So because they have stated that the car changes speed from rest to 15 meters per second. All right. That's why the final velocity is 15 meters per second. My next question is, what is the initial velocity? 0. Why 0? Because the car is at rest. Yes, the car was at rest and it started from rest. So there is information which is numerically given there in digits,
sometimes you have to infer that information. You have to dig out the information. So they haven't written that the initial velocity of the car is 0. They have just said the car started from rest. So this means that logically the initial velocity is 0. Okay? So you have to be very, very careful when you are reading the numerical. So in this way you will make all the data. Is it complete now? What we have to determine? Acceleration is question mark. Now you have written all the data. Step 2, appropriate formula. Step 2 is select the appropriate formula. Now, 3 formulae are given here. Can I use the third one? Third equation of motion. Why not? There is no distance given here in it. So I cannot use the third. What about second? Again, distance is involved, so can't use it. Can I use the first one? That is the appropriate formula. So if you will not make the data, if you will not do the first step, you wouldn't be able to determine the appropriate formula for it. Okay? So the appropriate formula is A is equals to V minus U by T. Step 3, careful calculations. We are doing calculations on the calculator and not writing anything there. No, you have to write each and every step. That will save you from making the mistakes. So acceleration is equals to V minus U. 15 minus 0 by 5. That is 3 what? Thank you very much. Meters per second square. While you are doing it, it seems quite easy. And it is easy if you just follow these 2 or 3 steps. Make the data, select the appropriate formula, and then careful calculations. Careful calculations. Okay? So in this way, you can make your numericals easy. So today we have just discussed the terminologies uniform, non-uniform, and we have just discussed the 3 equations of motion and how we are going to calculate the word problems or numericals with the help of these 3 equations. All right. Any questions? All right. Thank you very much. Please do revise this. Okay. I suggest you to buy at least 2 physics books and go through them. Allah Hafiz, beta. Allah Hafiz.